निवेश का जो सफर होता है वो आपके निजी सफर के जैसा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हर निवेशक की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप तय करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स को कैसे समझते हैं, निवेश से जुड़े जोखिम को आप कैसे समझते हैं, आपको कितना मुनाफा कमाना है और आप कहाँ पर घाटे से बचना चाहते हैं। चलिए, इन्हीं तमाम बारीकियों को लेकर मैं लेकर आती हूँ ये खास पेशकश निवेश की ABCD। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। जो इनकी खासियत है वो ये है कि ये हर उम्र के निवेशक को उनकी भाषा में निवेश की ABCD समझाते हैं। स्वागत करना चाहती हूँ जीरोधा और ट्रू बेकन के को-फाउंडर निखिल कामत का। निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आज जुड़ने के लिए, मेरे साथ आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। शुरुआत करना चाहती हूँ एक ऐसे सवाल से जहाँ पर पिछले साल हमने लोगों को बाजार में निवेश की शुरुआत करते हुए देखा है। पार्टिसिपेशन, जैसे कि तमाम रिपोर्ट्स भी कहती हैं, रिकॉर्ड हाइस पर हुई हैं पिछले साल बाजार की चाल को देखते हुए। लेकिन अब जिस तरह की बाजार की चाल है ना, उसको देखकर निखिल लोग कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट से डर नहीं लगता, लेकिन इक्विटी मार्केट से ज़रूर लगता है। तो मुझे बताएं कि इस तरह का जो हम उतार चढ़ाव वाला माहौल देख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस में क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने पिछले साल ही बाजार में निवेश की शुरुआत की है और अब इस तरह के उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी को देखकर थोड़ा सा घबरा रहे होंगे। तो हाय कविता, फर्स्टली अगर आप थोड़ा पीछे हट के देखें तो मार्केट्स इतना ऊपर जाने के बाद they've only corrected about 12%, 12-13%। तो मेरे ख्याल से ये नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है। और FDs में एक प्रॉब्लम है, जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो आपको भी 3-4-5% मैक्सिमम मिलता है और उस पर आप टैक्स भरते हैं। तो नेट इफेक्टिवली द रिटर्न यू गेट इज ओनली अबाउट 3-3.25%। अगर इन्फ्लेशन हमारे देश में आज 6% है, विच इज़ द ऑफिशियल नंबर, बट अगर आप ऑन अ मोर प्रैग्मेटिक वे देखें तो ऑन द ग्राउंड इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा लग रहा है। ऐसे लगता है कि इन्फ्लेशन 8-9% है। तो इस टाइम में बैंक FD खोलना इज एसेंशियली लूजिंग वैल्यू ऑफ द कैपिटल। कुछ बातें हैं जो 2022 ये साल हमें अब तक सिखा रहा है। निखिल, मैं तो हमेशा से ये कह रही हूँ कि 2021 में जिन्होंने पैसे लगाए हैं, 2022 एक ऐसा साल है क्योंकि यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस और निवेश इंस्ट्रूमेंट में हमें इतने ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत सारे निवेशक बहुत सालों में नहीं सीख पाए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं, हम देख रहे हैं लगातार बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी है। तो ये तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें और इस तरह के ट्रिगर्स निवेशकों को बहुत देर के बाद समझ में आती, क्योंकि अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, इन्वेस्टमेंट की आपकी खुद की एक जर्नी होती है। आपके लिए अब तक 2022 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और एसेट क्लासेस के बिहेवियर्स के लिहाज से निखिल किस तरह से पैन आउट हो रहा है? तो काफी ज्यादा लोग पिछले 1-1.5 साल में मार्केट में निवेश कर चुके हैं और ये ज्यादातर यंगर एज के इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। जैसे हम बोलते हैं कि फोमो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई लोग सुनते हैं कि उनके दोस्त ने 50% रिटर्न कमाया, 100% रिटर्न कमाया, तो ज़्यादातर लोगों को दे फील लाइक दे मिसिंग आउट एंड दे एंटर द मार्केट। एंड इन लोगों को कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि दैट इज़ अननेचुरल टू बी एबल टू मेक सच अ हाई रिटर्न एवरी ईयर। अगर आप पिछले 30-40 साल मार्केट देखे जो इंडिया में हमने देखा है, तो ऑन एवरेज अबाउट 10-11% इक्विटी मार्केट से कोई गेन कर सकता है। और इवन ऑन अ पर्सनल पोर्टफोलियो लेवल आई डोंट थिंक किसी को 30-40% से ज़्यादा इक्विटी में निवेश करना चाहिए। आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन इज की। पीपल शुड have allocation to real estate, to equity, fixed income, bank FD जैसे आप बोल रहे थे। And the equity component in itself, there are advantages, जैसे कि taxation is 10% if you hold it for a year. It's liquid, you can sell whenever you like. But even considering all of that, मुझे नहीं लगता कि किसी को 30 या 40% से ज़्यादा, especially if they are starting today, अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन नहीं लगाना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपका लगभग 17-18 साल का एक्सपीरियंस है बाजार का। आप खुद बोलते हैं कि आप रोज़ सुबह उठ के बस आपका एक यही काम होता है और ये काम करने में आपको काफ़ी मज़ा भी आता है। ये दिस इज़ समथिंग दैट यू एंजॉय और यू लुक फॉरवर्ड टू। आपकी अनुभव
के हिसाब से, जिस तरह से आप बाजार को पढ़ते हैं, समझते हैं, बाजार किस तरफ बढ़ रहा है, बाजार किस ओर जा रहा है, तमाम ट्रिगर्स को अगर मैं यहाँ पर ध्यान में रखना चाहूँ तो? मेरे ख्याल से अगर आप आज के बारे में बात करें तो काफी महंगा है बाजार। आई थिंक हम बहुत कंपनीज को ऐसे वैल्यू कर रहे हैं जैसे कि टुमारोज ग्रोथ हैज ऑलरेडी हैपेंड। अगर मैं थोड़ा डाइग्रेस करूं और इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट इक्विटी जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं पैसे एंड स्टफ लाइक दैट, अगर आप 100 स्टार्टअप देखें अभी इंडिया में ऑन एवरेज, मे बी 95 ऑफ देम आर नॉट मेकिंग मनी. Only about 5 out of the 100 are actually turning a profit. अगर आप सोचें कि एक ऐसा साइकिल आ जाए जहां 1 साल या 2 साल नया फंडिंग नहीं आएगा, तो it will be very hard for these companies to survive. Like that in the equity markets as well, I think we're affording a really high multiple to many of the stocks which are listed. मेरे ख्याल से काफी issues हैं. In the budget, we accounted for crude oil at $70 to $75 a barrel. जैसे आज लग रहा है, there is a possibility that it could go to $130, $140 a barrel. अगर वो होगा तो our fiscal deficit will be hit significantly. Inflation is a genuine worry. लोग अभी बोल रहे हैं कि I watched the RBI speech where they accounted for a very small number in inflation next year. But if the number were to be a lot larger, the only way to bring inflation becomes raising interest rates above the inflation rate. So if inflation were to go to 10%, हमें 11-12% interest rates देखने को मिलेगा. And in that scenario, I think growth will take a big hit, especially when there is so much debt and leverage in the ecosystem today, both in the public markets and the private market. So people should not undermine the gravity of the situation today. आज जो भी हो रहा है, there is a risk that it can become a substantially larger issue. People should be mindful of that. और लोगों को, जैसे मैं पहले कह रहा था, I don't think the time is right today to be buying in one's portfolio more than 30 or 40% as an equity allocation. थोड़ा सा और बारीकी में जाते हैं उस बात में जहां पर आपने कहा कि बाजार मौजूदा वक्त पे थोड़ा सा महंगा लग रहा है. मैं चाहती हूं कि आप कुछ पॉकेट्स हमारे लिए आइडेंटिफाई करें जहां पर आपको लगता है कि अभी भी बाजार महंगा है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी और कूल ऑफ हो सकती हैं. Well, I would say across the sectors, if you were to look at banking, for example, there अभी एक existential threat जैसा आ रहा है banking पे. You have neo banks, new kind of lending platforms which are starting to own the relationship. Even cryptocurrency is a threat to banking, right? You can have a DeFi bank which does not require a regulator in between. So structurally वहाँ पे बहुत सारे challenges हैं. अगर आप IT की बात करें तो if the West were to slow down fast, the repercussions of that will be felt because we will see the slowdown with a certain amount of lag. Commodity stocks ने बहुत rally किया है, auto companies ने बहुत rally किया है. I don't think that rate of growth is sustainable. And those industries, maybe I think there will be some headwinds in the near future. IT and pharma traditionally एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग छुप सकते हैं when markets get volatile. So IT and pharma I'm okay with, but rest of the sectors, अगर हम निफ्टी की बात करें तो they're quite expensive even today. यहाँ पर न्यू एज कंपनीज का ही जिक्र मुझे करना होगा जो फिलहाल काफी सफर करती हुई दिखाई दे रही हैं. क्या हुआ है इनके साथ और आगे क्या कुछ होने की संभावना है? So see, these companies are not all bad. Maybe the valuation and the multiple they listed at जब वो पहली बार market में IPO किए काफी महंगे थे. But at some point they will start to have, they will become attractive from a value standpoint. वो point कहाँ है मुझे पता नहीं है. But if something like a Nykaa were to be available at $5-6 billion valuation, considering कितना बड़ा business है और कितनी reach है and how well the company is run, I think it's a good investment opportunity. Something like Nykaa might become attractive at that level. Does that mean वो stock और 20-30% गिरेगा?
not necessarily, but at that point I think it becomes slightly more attractive निवेश करने के लिए. थोड़ा सा इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में बात करती हूँ मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट के पंडित्स हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं, लगातार हम देख रहे हैं अखबारों में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि लंबे नज़रिए में भारत को यहाँ पर कोई ना कोई एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. आपके नज़र में क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है यहाँ भारत के लिए, जिस भी तरह की टेंशन्स अब हम उभरती हुई देख रहे हैं? क्या भारत के लिए कहीं पर ग्रोथ स्टोरी के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो नई तरह की चीज़ें जो हमारे फायदे के लिए रह सकती हैं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है. इफ वी वर एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटी या क्रूड और नेचुरल गैस, आई थिंक द सप्लाई डिसरप्शन वुड हैव बीन अ वेरी एविडेंट अपॉर्चुनिटी. नहीं, क्योंकि रशिया इज अ ह्यूज प्रोड्यूसर, आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. रशिया की अगर आप जीडीपी देखें तो 30% of their GDP is just oil and natural gas. 60% of their exports are oil and natural gas. अगर आप सोचें कि all the oil and natural gas which was being supplied to Europe from Russia, there is a disruption in that. It becomes an opportunity for some people. मेरे ख्याल से that is a bigger opportunity for Iran and Saudi and oil-rich countries in that region. इंडिया के स्टैंड पॉइंट से आई थिंक वी आर इन दिस प्लेस वेयर ये काफी सेंसिटिव सब्जेक्ट है. इसके बारे में इट्स वेरी हार्ड टू कमेंट वन वे और अनदर, बट from a broader perspective we seem more aligned with the Quad, like countries in the US and Europe, relative to China, Russia, people in this region. So मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होगा. आई थिंक I only see that considering how much energy we import as a country, it will be detrimental to us, and it will be a lot more expensive and a big hit on inflation if this war were to be prolonged. चलिए, बाजार की बातों से थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ और थोड़ा आपके बारे में बात करना चाहती हूँ. मुझे बताएं, निखिल कामत का पैसे के साथ रिश्ता कैसा है? Well, hopefully अच्छा है. I mean, I've been lucky to have been in the right place and at the right time in the industries that we've operated in. I hope that lucky streak continues and we're able to be in the right industries at the right time. But very hard to comment on that. Like I would say अच्छा है. Relationship अच्छा है. आपकी कहानी सबको लगभग पता ही है. स्कूल ड्रॉप आउट, आपने 5 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू कर दिया था, उसके बाद आपने मोबाइल भी बेचे हैं. पैसों की अहमियत को लेकर समझ वो आपके अंदर कब से आई? आपने कब से ये समझा कि पैसे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं और पैसे एक ज़रिए से नहीं कमाए जा सकते, और पैसा कमाना एक चीज़ है और इन्वेस्ट करना एक चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंडियन फैमिलीज़ में हम बचत पर बहुत तवज्जो देते हैं निखिल, लेकिन निवेश को लेके जागरूकता अभी भी बहुत कम है, जो आपके और हमारे माध्यम से हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. निवेश को लेकर आपकी समझ और पैसों के कमाई के ज़रिए में डाइवर्सिफाई करने की समझ, ये सब आपके अंदर कब आया, किस उम्र से आया? क्या कोई ऐसा वाकया हुआ जहां आपको लगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट इज द राइट वे टू गो अबाउट? नहीं, आई थिंक पैसों की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी becomes very evident from when somebody is age 7, age 8. आपको कुछ चाहिए होता है, your parents might not be able to afford it, but a classmate's parents can afford it, and that gets you thinking from the very beginning. मेरे ख्याल से I have innately been an insecure person growing up, and I've always wondered why some people had more and why everybody could not have what some people had. So the importance of money, especially in a capitalistic ecosystem like the one we live in, it becomes very evident from the very beginning. But I think the पैसों की अहमियत के different scales भी होते हैं. Like you want to make money when you don't have any, when you're younger,
And when you start a business, hopefully you're in the right place at the right time. The company scales, and you get a certain amount of money, liquidity. Beyond a certain amount, I think the goalpost stops changing at a certain point, and it becomes less about things that you want in life, but more about how you can use the money in a manner where your moral conscience is not questioning you too much. I think money can be really impactful if used in the right manner. And I think beyond a point, beyond the few things that you wanted, you have those things. I think then you start to think, what can you do? How can you make a change? And how you can help and grow along with the people who have been with you for a long time. तो आपकी इनसिक्योरिटीज किस बात को लेकर होती है? क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता नहीं कि किसी बात को लेकर होती होगी। आपने जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और आपकी सीखी हुई चीज़ों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ कम से कम आर्थिक तौर पर तो सुधर ही सकती हैं। निखिल, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेके जागरूकता एक नीड ऑफ द आवर है। हमेशा से हम कहते आए हैं, अब तो और भी ज़्यादा इस चीज़ पर जोर देना बनता ही है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, ऐसा होना चाहिए जो आपको रात को सुकून की नींद दे। आपने इनसिक्योरिटीज़ का जिक्र किया। आपकी पर्सनल जर्नी में किसी भी तरह के फाइनेंशियल फियर्स जो आपने फेस किए हो, इनसिक्योरिटीज़ जो आप कह रहे हैं कि कुछ हद तक तो आपने उनका सामना किया है, लेकिन कुछ अभी भी है। ये तो एक जर्नी है, आपको इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, सही कहा। लेकिन फिलहाल स्टेटस क्या है? फिलहाल क्या आपके अंदर किसी भी तरह के फियर्स आते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर, या जिंदगी में आप अब तक जहां पर भी पहुंचे हैं, क्या जहन में सवाल आते हैं? क्या रात को लगता है कि सोने से पहले, जैसे कि अक्सर हम सब मंथन करते हैं, तो क्या आप भी सोचते हैं इस बारे में, अपनी जर्नी के बारे में? बिल्कुल, I mean, the life of an investor is like that, right? मैं सोने से पहले यूएस मार्केट्स देखता हूँ, and if it is a big down number, you sleep worried. I think the life of a trader or an investor is quite volatile. You often have, good days and then you have bad days, but every day you walk in not knowing आज क्या होगा. Unlike other jobs, it's not very repetitive. That's also something which could be a drive for people, because every day is something new, but it could also be a reason for worry and insecurity in a certain manner. But from my viewpoint, I'm insecure about everything. Like if I don't meet my parents for a month, I'm insecure if they like me or not, or if they're disappointed in me, or if I choose not to help out a friend in need, or if I'm not able to, that's the insecurity. I think insecurities are primarily driven by judgment, that you in your own mind think other people are judging you and how they are judging you. Very hard to detach from that. I'm a big fan of philosophy and reading books about the mind and how we've evolved as people, but I don't think anybody has truly cracked the answer, right? Like how to live in a manner where you truly don't care what other people think of you. So that still affects each and every one of us. बिल्कुल, वो थोड़ा सा मुश्किल भी है क्रैक कर पाना, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है और आपको कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको बैठकर सोचना होता है और उसी प्रकार आपको आगे बढ़ना होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट यू। निखिल कामत, अनवाइंड कैसे करते हैं अपने आप को? Well, I like sports. तो हर रात, I think between like 9 p.m. to like 10:30, 11, I go to the gym. I play badminton or football or table tennis. मेरा भाई है Nitin, so we guys play a lot of sport together. He's very good at basketball, so we play that. And I think sports are a big way on a daily basis. Sports and going to the gym. On the weekends, once in a while, I would meet a few old friends and catch up with them and kind of like catch up with all that we have missed in each other's lives. And then the general stuff, I watch a lot of Netflix. I like a lot of books. If I have a free weekend, it would either be reading a book or watching a Netflix show.
I watched something recently called एक शो है Inventing Anna. I really loved it. I think या नौ काफी अच्छा शो एपिसोड है. हैं, 1 hour each, and I finished it in one weekend. So I spent last weekend I spent 4.5 hours on Saturday and Sunday watching the show. तो जब आप अनवाइंड करते हैं तो क्या बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं? ऐसा मुमकिन है कि आप काम के बारे में ना सोचें? ऐसा हो पाता है? Well, करना पड़ता है, I think, also because I've been in this investing job for like 17, 18 years now. If I'm not able to cut off, I think you burn out. Everybody has to cut off, and we are lucky कि Saturday and Sunday markets खुले नहीं हैं. So I think you should use the opportunity to all the investors out there and, like absolutely switch off and don't think the markets exist for those 2 days. एक मैं चाहती हूँ कि आप रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क एपेटाइट के बारे में लोगों को समझाइश दें, क्योंकि इस इक्विटी में निवेश करना रिस्की होता है और बाकी तमाम रिस्क को लेकर जो भी लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क तो हर एसेट क्लास में है. आपको अपनी रिस्क समझनी है, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट समझनी है, जो कि निखिल मेरे हिसाब से निरंतर, जैसे कि आप इवॉल्व होते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी आय बढ़ती रहती है, आपकी लाइफस्टाइल बदलती रहती है, उस तरह से आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग भी बदलती रहती है. अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग, अपनी रिस्क एपेटाइट में कैसे पहचानूं? First thing, I think first rule for everybody ये होना चाहिए कि you never borrow money to invest. Leverage is the biggest killer in equity investing. आपके पास अगर 100 रुपीस हैं तो आप 100 रुपीस का equity खरीदिए, कभी 150 का मत खरीदिए using leverage in any way. It could be a future contract, option contract. Derivatives are meant to build more robust portfolios, जहाँ पे आप risk reward ratio पे work करके you can get a better profile, not to inherently take leverage, in my opinion. तो वो definitely करना चाहिए. But see, the problem with Indians, traditionally हमने बहुत ज़्यादा पैसा real estate and gold में invest किया है. Gold not in the online format, but the physical gold and jewelry. Like the vast majority of Indian household savings sit in fixed deposits, gold, and real estate. The problem with real estate is उस market में कोई liquidity नहीं है. When things go bad, if you want to sell your house, it is very hard to sell it right away. I think gold continues to remain a very relevant investment. अगर आप again if you go back in time, in the 1970s आपको कितना gold चाहिए था to buy a median house? Let's say the average house costed 20 lakh rupees back then, and let's say you needed 10 kilos of gold to buy that house. I'm just giving you an example. The same house costed lesser amount of gold in the 80s, lesser in the 90s, and it takes lesser amount of gold to buy that house today. So gold is a great hedge against inflation. And in the environment that we sit today, where we don't know if inflation will be 10% 2-3 महीने के बाद, you should definitely have some gold allocation in your portfolio. So I would suggest, maybe 20% of your portfolio in gold. For retail investors, using the sovereign gold bonds and stuff like that, which gives you an interest rate kicker from the government as well, I think is a great product. Maybe you should have 30% or 35% in real estate, and the balance could be a combination of equity and fixed income. It could be government debt, it could be corporate debt, it could be equity. And in equity, especially for first-time investors, आप penny stocks की तरफ मत जाइए. Don't go towards small cap companies and stick to large cap blue chip companies. मेरे पास समय लगभग ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपके लिए सवाल मेरे ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे चर्चा को ख़त्म करना होगा. एक सवाल तो मुझे आपसे पूछना ही है, जो कि मेरे ख्याल से आजकल कोई भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग या मार्केट्स या इन्वेस्टमेंट की कोई भी बात करें और क्रिप्टो करेंसी, NFT, इस तरह के सवालों पर अगर कोई सवाल ना करे तब तो चर्चा पूरी ही नहीं होती. क्रिप्टो करेंसी, इसको लेकर क्रेज़ है, हम सब जानते हैं. बजट में टैक्स आया है, TDS आया है. क्या भविष्य में आप इसको एसेट क्लास बनता हुआ देखते हैं? और अगर ये बन जाती है तो आपको लगता है कि ये इक्विटी को मात दे पाएगी? क्रिप्टो को लेकर, NFT को लेकर और इस तरह के वर्चुअल एसेट्स को लेकर आपकी समझ क्या है और आपकी फंडामेंटल व्यू क्या है? Well, fundamentally ये
काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि यू कैन आर्ग्यू ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. But let me take a pragmatic approach without going into the technicalities of it. I think ज़्यादातर firstly लोग आज crypto को currency नहीं समझते हैं. They think of it as an asset class. That has changed in the last 2 years. But on the ground, most crypto transactions by volume across the world, मेरे ख्याल से are not happening for the righteous, legitimate reasons, but they're happening to move money from unfriendly tax geographies to friendly tax geographies. And that I think will someday become an issue. आज की बात करें तो काफी central governments have gone against it, but in the future I think when this product really scales and gets mass adoption, it will be very hard to allow people to transfer money from place A to place B in an unregulated manner, and I think that will be a big issue for cryptos. चलिए निखिल, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद करते हैं कि आपकी समझाइश तमाम निवेशकों के काम आए और वो अमल करें आपकी दी हुई सीख पर अपने पोर्टफोलियो में. थैंक यू सो मच. Thank you, Kavita.